Hello everyone, welcome to Aptitude Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news that is relevant for your examination would be discussed in this session. So before I start, just to tell you the today's topic list. Today is 27th of July. The first topic is CBSE UGC has been asked to assess the vaccination of their staff. Second, drop in the vaccination pace will impact the target. The government has said that they would be vaccinating a lot more people, at least 50 crores of people by July. Now, the third is work under National Mission for Clean Ganga. The second last is limits of sectoral growth. This is an editorial from Indian Express. And the other editorial that I'm discussing today, that is like evaluating India's option in Afghanistan, right? So these are some of the important articles and editorial in the today's newspaper. And apart from this, there would be some MCQ questions. These questions would be relevant for your examination, and these questions are based on current affairs, right? So those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Aptitude Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting with the first news, that is CBSE UGC asked to assess the vaccination of staff. This is something which is important for your General Studies paper 2, issues related to development and management of health, right? So the government has asked UGC to check that what is the condition of their staff, because we know that pan-India, most of the educational institutions and schools are closed. So Ministry of Education, they have asked all the educational bodies, जो regulatory bodies है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, उन्होंने पूछा है कि जितने भी स्टाफ्स हैं, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनकी क्या स्टेटस है फॉर द स्टाफ द वैक्सीनेशंस, बिकॉज it is important, it's imperative that these vaccination is something which would be leading to the further disclosure or opening of the schools. Decision ली गई है. That was taken amid the demand from the section of faculty, parents, students. You know, the students who are studying in the class 10, below class 10, or even class 11 or 12, the quality of the education has deteriorated because the interaction at that point of time which is required was missing, right? You as an aspirant of civil services, it is equal for you that आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी आप कंफर्टेबल हो, बट एक ऐसे स्टेजेस में वेर यू नीड टू बिल्ड अ कॉन्सेप्ट, यू नीड अ फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, राइट? सो टीचर्स, स्टूडेंट एंड इवन द पेरेंट्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट स्कूल ओपनिंग के लिए जो वैक्सीनेशन है दैट इज़ अ प्री रिक्विजिट, एंड ओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वुड इंश्योर कि बाद में दोबारा कोई इन्फेक्शन ना फैले, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस वंस ओपन वुड डेफिनेटली build up a temperament for the student so that they can continue with the offline classes. Now assessment करने की बात की गई है. The central government has asked both the UGC and the CBSE, because most of the schools that are regulated in India are under the CBSE and all colleges are regulated by the UGC. So these two are the top apex body. So they have been directed from the central government कि जो CBSE है और UGC है वो एक assessment report बना करके central government को देंगे कि उनके कितने teachers और कितने non staff जो हैं वो actual में vaccinated है, right? And such data should be the key decision regarding the vaccination. जो खास करके opening of campuses हैं ये काफ़ी important होगी जितने लोग ज़्यादा vaccinated होंगे, right? So according to the vaccinations, the proportion of the vaccination, government would decide that in which particular state the colleges or the school is going to be open. Now these regulatory and administrative bodies जो हैं, जो कि खास करके दो मैंने बॉडी आपको बताया CBSE और UGC, they would be providing a top down encouragement. What is this top down encouragement? No, I basically tell you whenever you have a गवर्नमेंट पॉलिसीज वहाँ पे आप बॉटम अप अप्रोच रखें, राइट? बॉटम अप अप्रोच. नाउ इन दिस देयर इज अ टॉप डाउन. इन टॉप डाउन व्हाट हैपन, लाइक जो भी टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होंगे उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, उसके नीचे लोगों को, ताकि जो ग्राउंड लेवल पे स्टाफ है वो मोटिवेटेड हो कि हमारे जो सुपरवाइजर्स हैं या हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी वैक्सीन लेना हुआ है, राइट? सो दिस वुड बिल्ड अप अ कॉन्फिडेंस and it would speed up the vaccination process. Now many people still are reluctant to get the vaccination done. रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो ICMR के डायरेक्टर है मिस्टर भार्गव, ही सेड दैट स्कूल ओपनिंग में प्राइमरी स्कूल्स जो हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए खोलने के लिए, क्योंकि यंग चाइल्ड जो हैं दे हैव अ लोअर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन.
as this is being always argued by the expert, they have they have a notion that अगर third wave आती है तो children would be prone, but this is not a clear cut impact that will going to be happen. We do not have any clarity regarding that, but ICMR ने कहा है कि young children is still it would be on a safer side to start with. और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी क्लास 10th और 12th की स्कूलिंग भी स्टार्ट कर दी है, राइट? राजस्थान is among that states. Now several states have also taken steps to encourage the vaccination among the staff. और जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिसर हैं उन्होंने कहा है कि स्कूल के ओपन करने के लिए जो लर्निंग गैप है उसको कम करने के लिए स्कूल ओपन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस विच इज़ गोइंग, द पेस हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ही अहम रोल अदा करनी होगी. नाउ द अदर न्यूज़ इज drop in vaccination pace will impact the target. Actually, Government of India has set a target of 50 crores, right? So 50 crore target has been set. Now we have seen the slow in the pace. Now this pace would definitely impact the overall target that Government of India wanted to achieve, right? So this is important for your general studies paper 2, issues related to development and management of health, right? Now the government of India target to pull vaccinations, जहाँ पे बताई गई है कि by end of the year it appears hopeless. तो गवर्नमेंट ने सेट की थी 50 करोड़ की टारगेट, दैट इज नो फॉर टाइम बिंग दैट फील्स होपलेस. और इंडिया ने काफ़ी इनएडिक्वेट शॉट्स और वैक्सीन कैपेसिटी में जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी उससे कम वैक्सीनेशन हुई है. 21 June was the day when all free vaccination was started. I'll tell you that the later part of the video. So current pace की अगर बात करें, India would have administered 12.5 करोड़ doses of the vaccine by end of July, right? और इस साल के एंड तक बताई गई थी कि 50 करोड़ होनी है, 50 करोड़ by the end of 2021. This is what the target was. But we have not seen the pace. Let's see. To meet the 13.5 crore, about 60 lakh daily vaccination has to be done, which is not going. And on June 7, Prime Minister has announced कि जो free vaccination है वो start की जाएगी 21st of June. And this day was celebrated as International Yoga Day. Now this is the pace. You can see the progress report here. Fully vaccinated people is only 6.9% of the total population. At least one dose that have 25.2%. 18 plus की अगर बात करें 37%, 45 plus में 75 और 60 में 79%. So this is per dose. जितने doses हैं हर 100 डोज में इतने लोगों को डोज मिली है. Now India is likely to miss the vaccination target. 13.5 करोड़ की जो टारगेट है जुलाई के लिए, that is likely to be missed. जिस तरह से पेस है that has slowed. First it was argued कि जो 21 जून को 87 लाख डोजेस को एडमिनिस्टर की गई थी, बट उसके बाद से कभी भी 87 लाख तक की टारगेट नहीं अचीव कर पाई गवर्नमेंट. Meanwhile, the Union Health Ministry said that over 43.5 crore vaccine has been administered across the country. Now, work under National Mission for Clean Ganga. This is something which is very important for your prelims examination. National Mission for Clean Ganga is something which a direct statement can be asked. So, this is important for your General Studies Paper 3, Conservation, Environment, Pollution, Degradation and EIA. So the National Mission for Clean Ganga, उसके लिए budget allocations की गई थी 20,000 करोड़ रुपीस के आसपास in 2014. Now the main aim is to clean the river. इसमें अभी तक 15,074 करोड़ रुपीस allocate किए गए हैं. And of this 10,972 करोड़ जो 2/3 अमाउंट है that has been released by the Finance Ministry. और सबसे ज़्यादा से स्टेट को फंड मिली है that is उत्तर प्रदेश. I'll tell you the numbers also. कौन कौन से ऐसे काम है जो एनएमसी के जीसी के अंदर करवाए गए हैं. सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द वर्क दैट इज अंडर द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा. सो फर्स्ट इज ट्रीटिंग डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट, रिवर फ्रंट मैनेजमेंट, मेंटेनिंग ऑफ इकोलॉजिकल फ्लो, रूरल सैनिटेशन, एफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड पब्लिक पार्टिसिपेशंस, राइट. और अगर बात की जाए प्लान आउटलेट में तो गंगा जो क्लीन मिशंस हैं उसके लिए और से अलग भी कॉस्टिंग गवर्नमेंट देगी इन द फ्यूचर्स. एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फर्दर एलोकेट्स मनी टू द रिवर लाइन स्टेट, ऐसे स्टेट्स जिनमें रिवर्स ज़्यादा हैं उनके एडजेसेंट बॉर्डर्स पे. सो दैट स्टेट वुड बी गेटिंग मच मोर फंड कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, अदर स्टेट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द फंड एलोकेशन, उत्तर प्रदेश हैज़ रिसीव्ड 3,535 करोड़ रुपीज़.
and followed by the Bihar, which has received 2,631, and the other is West Bengal, and then Uttarakhand, right? So these are the state according to their allocations. Now we are discussing two editorial. The first is from the Indian Express, the limit of sectoral growth. This is important for general studies paper 3, right? Inclusive growth and issues arising from it. This is written by Mrinali Jha and Rosha Abraham. They are the faculty, they're the teachers at Ajimji Prem University. So in this editorial, there are some subtopics that I have segregated for you to understand it easily and well. Construction of sectors in the GVA and GDP, क्या difference है दोनों में, खास करके अगर growth और employment की बात करें, earning for the construction worker and the way forward. And the entire theme of this editorial is Indian economy and the construction sectors. So बात की जाए अभी latest estimates जो आई है fourth quarter में in the financial year for 2021. So it says like it has brought some relief in the Indian economy, and definitely these जो खास करके एक ईजीनेस मिली है जो फाइनेंशियल सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुई है, वो पॉलिसी मेकर को भी बहुत हद तक मदद करेगी पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में. एंड इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन डिवास्टेटिंग फ्रॉम COVID-19 health repercussions. We have seen the pandemic, which has, the growth rate has deteriorated to a certain level, which will take another year to revive. और क्वार्टर्स में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की, यहाँ पे इस एडिटोरियल में कंस्ट्रक्शंस पे फोकस की गई है. जीवीए में अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, दैट हैज़ ग्रू अप टू 8%, राइट. और एम्प्लॉयमेंट जो है सेक्टर में दैट हैज़ ग्रू बाय 3%. दिस इज द एस्टिमेट बाय द CMIE और CPHS के द्वारा. Now, what about the construction sector in the GVA? Construction sector has shown 50% increase in the gross वैलिड वैल्यू. जो GVA है ग्रॉस वैलिड वैल्यू, उसमें लास्ट क्वार्टर के कंपेरेटिवली अच्छी परफॉर्मेंस रही है. एंड दिस इंक्रीज हैज डबल्ड द एक्सपीरियंस ऑफ दिस सेक्टर. प्रीवियसली ये 7.7% थी. नाउ इट हैज़ नाउ इंक्रीज अप टू 15%. नाउ GVA क्या होती है? GVA के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया. GVA इज एन एसेंशियली अ मेजर जहाँ पे नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर की जाती है बाय डिड्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ एन इनपुट which is there in the productions, right? So this is called GVA. अगर आपने economics पढ़ी है NCERT की, you must be aware with this concept. The Union Budget 2021 has also allocated considerable amount in the infrastructure sectors. गवर्नमेंट ने जो वर्कफोर्स को वापस लाने के लिए सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा फंड एलोकेट इस बजट में भी किए थे. एंड दिस इज़ द ray of hope that is coming with this sector, so that this sector can have a catalyzing role in the overall boosting of the economy and boosting of the specific sectors. GVA and GDP की बात करें, that increase in the GVA does not always translate into growth or employment. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर GVA में ग्रोथ हो रही है तो उस कंट्री की या सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी. एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं. सिर्फ आप GVA और GDP की बात करो, दिस इज कंसिडर एज एन इंडिकेटर्स. ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स वो ये बताते हैं इकोनॉमिक हेल्थ किस तरह से है, एंड ऑल्सो मेजर्स द इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट. बट मियर सेक्टर इन दिस ग्रोथ विल नॉट बेनिफिट द वर्कर्स. इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि वर्कर को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट होगी. Thus, the construction worker means the worker using data from the National Representative Consumer Pyramid, जिसको CPHS बोला जाता है या फिर Center for Monitoring Indian Economy. So the data is coming from some authentic sources that we can rely upon. Now growth versus employment की बात करें, एक तरफ growth किस तरह से चल रही है, and at the same time we want the same pace for the employment. So this has to be go simultaneously. लास्ट क्वार्टर्स की अगर बात करें 1920 में, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन दैट ग्रू एट 8%, राइट, एंड एम्प्लॉयमेंट एट द सेम ग्रू बाय 3%. आई हैव टोल्ड यू दिस इन द बिगनिंग. और एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस, द फैक्ट इज दैट जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं उसमें वापस से रिवाइवल हुई थी. जितने भी डिस्प्लेस्ड वर्कर थे हु हैव मूव्ड आउट टू देयर नेटिव टाउन, दे हैव कम बैक इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, राइट. एंड फॉर एग्जाम्पल 20% of the workforce has employed in the manufacturing and also in the construction. These sectors are not that much, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत है और कई कंस्ट्रक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स होते हैं, इसलिए कोविड प्रोटोकॉल्स भी फॉलो किए जा सकते हैं. Now during normal times सेक्टर्स की अगर बात करें, they have typically 60 to 65% million of worker. So इतने वर्कर्स काम करते थे, and this is only 10 to 15% of India total workforce. अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स की बात करो तो यहाँ टोटल वर्कफोर्स में सिर्फ 10 to 50% लोग कंट्रीब्यूट करते हैं. नाउ
अर्निंग ऑफ अ कंस्ट्रक्शन वर्कर कितने अर्न करते हैं. मोर ओवर अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें जाए, दिस इज नॉट इनफ, एंड अर्निंग ऑफ एन एवरेज डेली वर्कर ऑफ द सेक्टर इज एक्चुअली डिक्लाइन द ईयर. So these number, this amount is declining, and in January 2020, according to the reports, it has been seen that construction worker, they only have an average of 8,900 rupees, right? And later it has declined to 8,600. So this is all about the GVA in the overall economic perspective that has passed to the workers. Now, what is a way forward that you can conclude? Capacity की अगर बात करें, they have a limited terms of numbers and they can absorb. यहाँ पे काम भी limited है. People are actually moving from one place to another in search of job, and the need of the hour is to go beyond to rely upon the sectoral growth, right? But direct transfer की अगर बात करें, cash or food is something which is required, and employment guarantee program should be provided from government. And also Manrega is something which is very important, although government has reduced its allocation and the footfall in the Manrega has increased. So there are the need for direct transfer for food, livelihood and other support that can be providing the government. They can be providing benefits to the people and all there who is working in the construction sectors. Now the other news is evaluating India's position in Afghanistan, important for your general studies paper 2, India's and its neighborhood relations. Afghanistan के issues कई बार आपने न्यूज़ में पढ़ा है, have also discussed in depth. अभी इसमें बात करेंगे किस तरह से इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है अफगानिस्तान को लेकर के, क्या क्या इश्यूज और कंसर्न है, टॉकिंग विद तालिबान, जो रीजनल सिचुएशंस है, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उनके बारे में, एंड द वे फॉरवर्ड. सो इट इज़ कोइंसिडेंस जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी अफगानिस्तान में एग्जिट किया है. बात ये भी चल रही है कि दे वुड बी वेरी सून एग्जिटिंग फ्रॉम ईरान. द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इज विजिटिंग द US. So it is a time to focus on shift of the power and shift of the position and the shift of the policy in the East Asia. So US की जो रिस्पॉन्स है चाइना को काउंटर करने के लिए या चाइना के साथ भी उनके अपने हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात की गई है, स्पेसिफिकली इन द पैसिफिक ओशन डेमोक्रेसी. तो चाइना राइज इज चैलेंजिंग एंड यहाँ पे सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप है. तो इंडिया के भी साथ चाइना की ये कोशिश है कि दे कैन बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप सो दैट अ पीस एंड स्टेबिलिटी कैन प्रोस्पर इन द रीजन. US want to play a key role in this block. अगर बात करें क्वाड ग्रुपिंग की, क्वाड ग्रुपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड US है. ये चार कंट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल कर सकते हैं. एंड क्वाड एज एन कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम क्वाड ग्रुपिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो क्वाड से आपसे मेंस में क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. नाउ इश्यूज एंड कंसर्न्स की बात करें, अनलाइक अदर मेंबर्स, इंडिया की जो सेंट्रल एशिया में जो क्वाड पावर्स है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर्स है जहाँ पे हमारे लैंड बॉर्डर्स चाइना के साथ हैं. जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं उसको काउंटर की जा सकती है. एंड US में हैव ट्रीटेड अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ ग्रैंड स्ट्रेटजी, जहाँ पे वो चाइना के जो मैरीटाइम एरिया है वहाँ पे दे वांट टू बिल्ड सम गुड रिलेशनशिप विद चाइना सो दैट दे डोंट वांट टू हैव अ फाइट विद चाइना. इंस्टीड दे वांट टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप एंड दे कैन बिल्ड इट वेरी हेल्दी. नाउ बेरिंग एंड इंटरग्रेरियम इन 1990, इंडिया ने हिस्टोरिकली अफगानिस्तान के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस रखे थे. एंड 1950 में एक ट्रीटी भी साइन की गई थी, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. नाउ इंडिया इंटरेस्ट इज इन्फ्लुएंस सफर्ड बाय द तालिबान जो कि बैक्ड है पाकिस्तान. इन्होंने कैप्चर किया था काबुल को इन 1996. नाउ तालिबान की बात करें, इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया के पास क्या अभी सबसे बड़ी जो क्वेश्चन है कि व्हाट इंडिया शुड डू, राइट. सो फर्स्ट पॉइंट इज जो कमेंटेटर्स हैं दे हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि तालिबान के साथ टॉक इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट टॉक्स वी कैन नॉट एस्टैब्लिश एनी पीस प्रोसेस देयर, राइट. And India is already established contact with the Taliban in Doha. Unofficially, they have established a talk, but let's see formally what they're going to do. And talking to them is again seeing the opportunity जो कि guarantee करेगी return and development assistance and other pledges. And India has backed anti-Taliban northern alliances, right? India want कि terrorism को किसी भी तरह से अफगानिस्तान रीजन में बढ़ाया ना जा सके. And at this point of time, Taliban talks with Taliban look inevitable. This is something which is mandatory for India. Now, regional solutions की बात करें, convergence की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. India and the three key regional players like China, Russia and Iran, they are signing a political settlement in Afghanistan to establish a political stability, a democratic stability. Now, these three countries have already opened a public direct talk with Taliban. और बात करें अगर contract की, so tactical in nature,
दीज थ्री कंट्री वॉन्ट, अगर बात करें चाइना, रशिया और ईरान की, ये चाहते हैं, इंडिया भी इसमें की प्लेयर है, कि अफगानिस्तान वाले रीजन पे स्टेबिलिटी पूरी तरह से मेंटेन हो सके. Now, what is way forward? The term is like we should find a political solutions in this crisis, and India need to build a healthy relationship with Afghanistan as well as with Taliban. And in the political solution is not achieved, India could seek a non-conventional methods, जो कि 1990 में हमने ऑफर किया था, एक allies support की तरह वहाँ पे इन्फ्लुएंस की थी इंडिया ने 1990s में. Now it can be achieved unless together with the regional power. We need a regional power and we need a regional confidence to build a healthy Afghanistan. Now, central to approach is India's striking a balance between continental realities. और यूएस की अगर रोल की जरूरत पड़े मैरिटाइम इश्यूज में, तो उन्होंने अपनी रुझान दिखाई है. दे वुड बी डेफिनेटली कमिंग अप इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड क्वाड मेंबरशिप है, जहाँ पे यूएस अपनी एक प्रोएक्टिव रोल अदा कर सकती है. राइट, सो दिस इज अ वे फॉरवर्ड यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशंस. Now coming to the MCQ questions, before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is A. For the second question, the correct option is C. Today's question, consider the following statement with regards to new umbrella entities for retail payment. Retail payment, and is the retail payment. Only entities that are owned and controlled by the citizen with at least 3 years of experience in the payment have become the promoters of NUE, and no foreign investor is allowed to allow in the existing guideline, right? So if you know the correct answer, this was there in the news, and this is very important for your prelims. So do write your valuable answers in the comment section down below. Second, consider the following statement regarding the electoral bond. आपको बताना है electoral bond में कौन कौन से questions statement important है. All nationalized in India are authorized to issue cash bonds valid for the 15 days of that of issuance. जितने भी banks हैं और Indian banks would be authorized to do so, and these banks are redeemable in designated account of the registered party. Right, electoral bond was there in the news or year before, so this is something which is very important. In the West Bengal elections also, these news were tendered. So do write your answer in the comment sections. So this was all about the daily news and editorial analysis, followed by the MCQ questions. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.